Hello everyone, welcome to a fresh new week and what do we have with us this week? Well, काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो eISL Pro League Season 15 स्टार्ट हो चुका है, so let's get some hype ready for the event। उसके ऊपर बात करेंगे। फिर Valorant के डेवलपर से हम जानेंगे कि उनका thought process क्या था behind the creation of Neon, and like always we have someone very special lined up for our interview as well। So without wasting any further time, this is Super Johnny and you guys are watching the World of Esports। eISL Pro League एक ऐसा टूर्नामेंट है that's all about the emotions, the thrill and the nail-biting matches। और साथ ही साथ इस इवेंट में हर बार हमको देखने को मिलते हैं नए कॉन्करर्स और नए चैलेंजर्स भी। But let's get ready for the action that has already begun। Gets a spray off, 2 kills, flashes good out, getting pounded down by Hunter. Rez shuts them down, he wants the ace. Beautiful ace there. Oh my goodness, 2-3! And a line up for Yuri. That's an ace! नियॉन वैलोरेंट की एक नई एजेंट है और ये एक ऐसी एजेंट है जो गेम के अंदर रन एंड गन को वापस लेकर आई है। इस एजेंट का हाई स्पीड इंटेंस गेम प्ले आपके मैकेनिकल लिमिट्स को बहुत ज्यादा आगे तक पुश करता है एंड यू नीड टू बी ऑन पॉइंट टू कीप अप विद द स्पीड। बट चलिए अब डेवलपर से जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था नियॉन के डेवलपमेंट के टाइम पे एंड व्हाट वर द न्यूएंसेस बिहाइंड इट। When we're starting out on the idea of a new character, we're looking at a lot of the opportunity spaces for a character, and a lot of it's like, what don't we currently have within Valorant? Hi, I'm John Kosicki. I am the character producer for Valorant, and so my job is twofold. It's like to think about like, what are we making next? What does the game need next? As well as just oversee general development. Hi, I'm Ryan Coussart. I'm one of the agent designers on Valorant. I work on the gameplay and work on some of the mechanics that we see on our agents today. When we're starting out on the idea of a new character, we're looking at a lot of the opportunity spaces for a character, and a lot of it's like, what don't we currently have within Valorant? And that's going to be a mix of like design, thematic, art, narrative, like everything put together. It takes us about anywhere from 10 to 14 months to make an agent. Any faster than that, we start to lose like a cohesiveness with the character. We kind of always knew we wanted to have sprinting in the game, and that was kind of like the seed that kicked off a lot of the conversations around Neon. I think the design space for mobility has always been kind of limited, mainly because it breaks one of the main rules, and it's that consistency. It's being able to predict the movement. And so with Neon, what we wanted to ensure was that we were putting her in a place where you can predict some of the intentionality. From there, once we've got a hook that we feel good about, we start bringing in a concept artist and a narrative writer and really starting to flesh out the different thematic aspects of the character. And so for a character like Neon, that starts out of like, okay, she can run. And we're like,
all right, let's think about what are sprinting thematics. Like we looked at like Olympic runners, we looked at running gear, we looked at athleisure, all of these things that like when you look at her, you're like, okay, cool, I get what she's about at a glance without having to think too deeply. And our goal there is to really just lay out a foundation for the character so that when other people come on board, they have a good structure to work with. They know the personality of the character, they know the visual design of the character, the rest of the gameplay should be in a pretty locked state. And then from there, once we've got that good foundation, we'll move on to pre-production. And pre-production lasts like a month to 2 months. And the idea there is just to like, on our end, see if we can make this stuff work. So it's like, we got a proxy model in for the character. And all we're looking to do with this model is be like, can I read these colors and shapes against a wall? With Neon's hair, like, do the buns stick out above boxes? Like, really simple stuff like that. From there, it's about another 3 to 4 months of just production. And that's 3D, tech art, VFX, animation, audio, QA. This is where everyone's really there, and we're really making the character as you know them now. And John's gonna hate to hear this, but production is my favorite part. I think production is when the design really starts, even though it should have already ended, because you start to see a lot of things that the concept artists start to do. Some of the animators, they have these ideas where it's like, okay, she's gonna throw her hand down and flip her hand up. And so when you start to see those animations, you're like, okay, we'll make it instant. Like it'll come up as one big explosion. Though the direction's already locked, there's a couple of those pieces like that give you those levers when you balance. Seeing that stuff come in is so inspiring. Overall, when we start getting production elements in, it's always just a collaboration around like, when we see this for the first time, how does it feel? Because a lot of times when we're playing pre-production, it's all like us taking stuff from other characters and throwing it together and seeing how it feels. But this is the first time we'll see it for real. I've been at Riot for about like 10 years now, and one of the opportunity spaces has always been the Philippines. I think it's just a space within an unrepresented country. A designer that's a Filipino that dreams of working on something like this, you really don't get a shot like this, and so, sorry, it's a dream, it's like a dream come true, and so you do have that pressure. How can I make that come true in a way that would make me proud, would make my little brother proud and like family proud and stuff like that. And just gamers across the world, there's a lot of Filipino gamers out there that are looking for something to attach to. You want to find that agent that's yours, or that you can say, I'm that. So for Neon, we're kind of looking at, is she doing the things she wants to be doing? Is her wall creating safety? Is her relay bolt actually allowing her to follow up on kills? Is the sprint letting her break timings? We look at what we intend Neon to do and see if she's actually able to achieve those, or if she's failing in a certain way, if there's opportunities there. And then from there, we also take a look at win rates, we take a look at pick rates, ensuring that she's able to, at different levels, kind of offer something for her composition. Every agent should make you think about the game in a different way. And it's like the way you're approaching an angle should be different when a new agent is introduced. The way you're approaching a plant or a post-plant scenario, all of these things should change when new agents are there. Running with Neon made you think about like when to be holding an angle or how to think about the sound she's making. Like that was all intentional and part of the goal. I don't know, I just really hope everyone is running as fast as they can on her. That's my dream, is just sprint and run in and get frags. और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के इंटरव्यू की तरफ, जिसमें हमारे साथ एक बार फिर से, जैसा मैंने पहले कहा था, एक और स्पेशल पर्सनालिटी जुड़े हैं जो हमें अपनी ई स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बताएंगे. सो हियर वी गो. Alrighty, ladies and gentlemen, लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी eISL के ऊपर भी. इस बार भी हमारे साथ इंटरव्यू के लिए eISL से एक और स्टार जुड़े हैं. सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आदित्य दुबे aka Aadizema, representing Hyderabad FC. Zima, कैसे हैं आप? How are you doing? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपसे बात करके मतलब और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिकॉज मेरे को लोगों की स्टोरीज जानने में काफ़ी इंटरेस्ट है. आपकी स्टोरी में अब आपसे जानना चाहूँगा, कैसे स्टार्ट हुआ गेमिंग, सबसे पहले उस पर बात करते हैं. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर. बचपन से
ड्रीम थी कि प्रोफेशनल फुटबॉल खेल पाऊंगा कभी ना कभी. Then I was in Pune City FC. मतलब I was in a short list 25 players की इंडिया की. And after a while खेल के उन लोग के साथ I realized I can't make this. कि I'm not physically capable now कि मैं compete कर पाऊंगा on that level. So मैंने focus change करा. I've been playing FIFA from FIFA 11 I guess. वाओ. स्टार्टिंग में पैशन था कि फुटबॉल का पैशन था, तो खेल के आया फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद, और दिन भर फीफा अपने भाई के साथ. दो भाई हैं, मतलब एक वन कजिन एंड एक मेरा साका भाई है. हम लोग तीनों लगे रहते थे सुबह से शाम तक. आप सोचिए 6 घंटे तो खेलते रहते थे. आई थिंक वही वो पुरानी ग्राइंड है जिसके चलते अभी फाइनली एक बार फिर से आपने प्रोफेशनली लाइक फुटबॉल तो नहीं बट फीफा ई फुटबॉल आपने अपना करियर अब बनाया, अब शुरू किया है. बट अगेन एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हर एक eISL की पर्सनालिटी जिससे मैंने बात करी, सबके डिस्कशन थे, एवरी वन मेड इट टू द बिग लीग्स एट वन पॉइंट, बट आप पहले इंसान हैं जिन्होंने खुद से डिसीजन लिया था कि चलिए ये नहीं हो पा रहा है. तो वो चीज़ पे मैं एक बार फिर से जाना चाहूँगा, लाइक what happened exactly, like because it's a big step making it into the top 5 and then stepping back all of a sudden. जैसे I've been in Santosh Trophy camps. I'm from Bhopal, so I've been selected like the best player in Bhopal लगातार 2 साल तक. Wow. I've been man of the match, player of the tournament in clusters MPK from Madhya Pradesh. And then after a while, मतलब my routine was very difficult. I'm telling you, I used to wake up at 4 a.m. before school. मैं कार की लाइट्स की अपनी ऑन करके प्रैक्टिस करता था एंड देन स्कूल जाता था बिकॉज माई डैड इज एन IAS. Wow. वो बहुत एडमेंट है कि नहीं आपको पढ़ाई मिनिमम करनी पड़ेगी. एंड आई वॉज रेडी टू स्टेप आउट कि 11th के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. अब प्रैक्टिस एंड स्कूल इज़ नॉट एक साथ नहीं हो पा रहा है. बट देन मुझे एक रूटीन फिक्स करना पड़ा. सुबह उठता था, स्कूल जाता था, स्कूल में प्रैक्टिस करता था, घर आता था, 2 घंटे सोता था, फिर शाम को वापस प्रैक्टिस करने जाता था. Well, that is dedication, I have to say. It was a very difficult. मतलब I remember कि I was coming back from that camp and I'm talking to my dad and I'm telling him that I think so it's very difficult now because I think I've given everything now. And after a while I'm playing against these people जिनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि कैसे खेलना है. And it's not about, I feel like mentally I was there with them. जो वो लोग सोचते थे I could do that, but physically it was very difficult considering what was my personality back then. And I think वही एक टोल लेने लग जाती है आपके ऊपर and it start affecting your mentality as well. So आपने step back लिया and then FIFA आपने बताया कि स्टार्टिंग में तो पैशन था बट compete करने का इस स्पोर्ट में कहाँ से अब जुनून कहाँ से जागा? तो लॉकडाउन हुआ एंड फीफा में there was that back then there was this thing वीकेंड लीग में आप जितने ज़्यादा विन्स लाते थे आप उससे वेरिफिकेशन होता था जी. तो I was the first Indian to get verified in FIFA 20 and I wasn't competing back then. तो ऐसे ही there was this organization connecting esports जहाँ पे probably इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स खेलते थे. चरणजोत था मेरे साथ में, आदित्य चड्डा था जी. तो एंड मैं तो बहुत कैजुअल गेमर था उससे पहले. आई एम नॉट इवन किडिंग, आई हैव नॉट प्लेड अ टूर्नामेंट ओनली, बट दे सेड कि आओ आप. तो बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड कंपीटिंग. आई वाज विद देम फॉर एन ईयर एंड वो आई थिंक इसी साल डिसबैन हुई. I mean, but ये भी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि कैजुअली खेलते खेलते मज़े के लिए खेलते खेलते जस्ट गेटिंग पिक्ड अप बाय एन ऑर्ग. तो what was your decision at that time, like जब ऐसे बड़ी ऑर्ग आपको अप्रोच करती है with like Charanjot is like a big name as far as the Indian FIFA scene is considered the best, and you are teammates with a person like that. तो was that a big confidence boost for you कि चलिए फुटबॉल एक्चुअल वाला तो पीछे रह गया बट इसमें आई कैन गो फॉरवर्ड? तो देयर इज दिस लीग, आई थिंक प्रो क्लब्स आपने सुना होगा उसके बारे में. तो चरणजोत एंड जेना सेड वर मेकिंग अ टीम. So they approached me कि we are trying to get probably the top best 11 FUT players to make a pro club team. So हम लोग replicate कर पाए कि actual football को in pro club. जी. So I was talking to them and Jena said is also a very good like friend of mine along with CJ. So they were like कि I think you can do it. We have been playing with you from a long time. 1 साल हो गया है and we have recommended it. आपका नाम उसके लिए.
इन दोनों से बात कर रहा था, फिर इन दोनों ने बोला कि हाँ व्हाट होने के लिए क्या है तुम्हारे पास, कुछ नहीं। इट्स अ वन टाइम शॉट, अगर चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा, यू विल लूज सम टूर्नामेंट्स, वो तो होता ही रहता है। I mean, that's an interesting outlook on things कि हारने के लिए कुछ नहीं है, टूर्नामेंट के लॉसेस तो चलते रहेंगे, अगर जीत गए तो मे बी वी कैन अचीव समथिंग बिग टुगेदर। एंड आई थिंक फ्रॉम देयर getting approached by orgs, getting picked up by some of the best players in the country for pro club, अब जो eISL का आपका ट्रांजिशन रहेगा, जैसा आपने बताया यू स्टार्टेड प्लेइंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन, दैट्स नॉट दैट लॉन्ग, 2 years के अंदर यू हैव मेड इट टू द बिगेस्ट स्टेज फॉर फीफा दैट हैज़ एवर बिन इन इंडिया। कैसा लग रहा था जब eISL के क्वालिफिकेशन मैचेस खेल रहे थे, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन यू एक्चुअली क्वालिफाइड? I'm not kidding. So before that tournament, I was applying for some universities in UK, and I got into 2 or 3 universities. And I was not even playing FIFA this year. मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सुबह उठा हूँ और फिर ये आई एम टॉकिंग टू दिस पीपल, दे सेइंग ये ISL क्वालिफायर्स एक्सपीरियंस के लिए खेल ले, तो मैं खेल लिया, एंड लकीली माय ब्रैकेट वाज कंपैरेटिवली इजियर देन मोस्ट ऑफ द पीपल, and I got qualified, and I was very scared to talk to my dad कि कैसे बताऊँ उनको कि I don't want to go to college right now, maybe next year, क्योंकि this eISL kind of opportunity हर साल नहीं आती है जी। and I'm telling my brother कि भाई बात करना यार, मेरे से नहीं हो पाएगा and imagine मेरा जो छोटा भाई है, he is talking to my dad कि पापा भेज देते ना उसको, क्या हो जाएगा, जाने दो। फिर I told my parents and they're very skeptical कि यार it's very 4 months is a very long duration. Yeah. तो वो बोलते हैं कि वो सब ठीक है, mentally will you be able to do it, because playing is not a problem, and 4 महीने being with same 25 people, उसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा बिग बॉस वाली वाइब्स आ जाती है वहाँ पे बीच में, बट अगेन आई थिंक पेरेंट्स का कंसर्न जो था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, लाइक 4 months जैसा आपने मेंशन किया, इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड मेंटल हेल्थ पे भी फोकस रखना पड़ता है, सो आई थिंक आई रियली लाइक दैट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो आपके और आपके पेरेंट्स की थी कि कैन यू मेंटेन योर सेल्फ इन दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि कम्पीट कर रहे होते तो बहुत कुछ होता है। और जब आप आ चुके हैं यहाँ पे आडिजीमा टू दी eISL, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? So this is probably the first tournament जो मैंने आज तक खेला है, that is a 2v2 tournament. Yeah. तो the difficult part is कि difficult नहीं, but it's a new part is कि this year the FIFA has started कि 2v2 tournaments हो गए where you have to rely upon your teammate and आपकी जो chemistry है उसके साथ। जी। तो मी एंड धर्वेश हैज बीन फ्रेंड्स, हम 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं, compete कर रहे थे, टूर्नामेंट्स खेलते रहते हैं, एंड हम लोग यहाँ आए तो वी वर स्टार्टिंग बहुत चिल थे कि कर लेंगे यार कुछ ना कुछ करके, बट द जर्नी थोड़ी हम लोग की वियर्ड रही है, बिकॉज स्टिल लाइक 5 games are left and still we have not decided कि ये कोई पर्टिकुलर प्ले स्टाइल है कि नहीं। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस कि नाउ इन नेक्स्ट टाइम आई विल नो कि हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, टीममेट से कैसे बात करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गेम प्ले कैसे डिसाइड करना है जी। कि किसके कैमरा, मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज़ें होती है, हु इज़ गोना प्ले गेस्ट, बिकॉज द पर्सन हु विल प्ले गेस्ट उसको थोड़ा डिले होगा, एंड कौन किसके कैमरा में खेलोगे, बिकॉज सब लोग अलग कैमरा खेलते हैं, एंड कौन सी फॉर्मेशन, तो बहुत सीखा है मैंने, एंड होपफुली अगर मैं नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई करता हूँ तो जो प्रॉब्लम्स इस बार हुई है वो अगली बार मुझे एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ। I like hearing this. I like hearing this optimism कि you are sure कि अगली बार मैं चीज़ें फिक्स करूँगा, एंड आपने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा सीखा है, बिकॉज दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन द फैक्ट कि अभी इंडिया के काफ़ी सारे टॉप प्लेयर्स आर पार्ट ऑफ द eISL, एंड आपके लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ का एक्सपीरियंस रहा है। एक इंटरेस्टिंग एक फ़नी क्वेश्चन पूछता हूँ, नॉट फ़नी बट मेरे को मज़ेदार लगेगा, Who amongst the boot camp जो आप लोगों का चल रहा है has been sort of a mentor to everyone कि सबको जाके बताता है कि alright this is how you need to practice, this is ये आपका weak suit है, इस पे काम करिए, कोई करता है ऐसा? मैं I'm being frank here because people are very competitive. Yes. कि कौन किसी को जानबूझ के बताया है कि मैं तेरे पे ऐसे गोल मार सकता हूँ, तो प्लीज़ डोंट डू दैट।
but but I still try to the people who are close to me in boot camp, because it's अगर आप किसी को बोलोगे तो people take this in a very negative sense. Yeah. कि अब हम we feel like all 22 people are on the same level. अगर आप कुछ बोल रहे हो, आप कैसे बोल सकते हो? But the people जो मेरे से close है, मैं उनको बताता रहता हूँ कि मतलब these people come to my room and tell me कि यार please you have been playing for a long time, because most of the people and eISL is their first tournament. जी. So some people come to me and say कि गेम प्ले के बारे में बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, हम लोग का अगला मैच इनसे है, क्या करना चाहिए. तो मैं ट्राई करता हूँ जिन लोग से, बिकॉज पीपल आर क्लोज टू मी. आई मीन यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ऐसे competitive लोग एक साथ होते हैं, रैंडम मोमेंट्स पे वॉर्ड रिव्यूज चालू हो जाते हैं कि मैच लगा लिया और डाइसेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये गलती हुई है, यहाँ पे ये गलत कर दिया. आप लोग अभी चलता है ये चीज़ कि eISL का मैच चल रहा है, यू आर नॉट प्लेइंग एंड यू आर जस्ट वाचिंग. हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी का मैच है, जैसे कल आप मान के चलिए, कल देयर वाज दिस गेम अगेंस्ट चेन्नई वर्सेस जमशेदपुर. जी. तो ऑल 18 आई थिंक 4 people were here, so all 18 were in a room and we were watching the game together. हम लोग बात कर रहे थे यार ये क्यों नहीं कर रहा है. And is that something you enjoy? Like वो जो moment होता है बैठ के watch party type? That is something I will cherish पूरी life में, because I'm pretty sure कि अगली बार भी अगला tournament हो तो ESL, तो it's not gonna be in bubble and we won't get the same time the same things जो हम लोग को इस time मिल रही है experience. I mean, मैं भी उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट टाइम हो तो बबल में ना हो, ताकि प्रॉपरली मीट एंड ग्रीट हम लोग भी आपको कर पाए, एंड जो इंटरव्यू हो अगली बार का दैट हैपेंस विद अस टुगेदर इन प्रॉब्ली अ वेरी नाइस सेटिंग एंड नॉट ऑनलाइन. बट Zima, it has been a pleasure talking to you. Thank you so much for joining us. एक मैसेज अगर आप देना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने भाई को जिन्होंने आई थिंक आपके डैड से बात करी यहाँ तक आपको लाने के लिए, तो मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज she's been saying कि I've been like one of the best in the country from last 2 years, but I imagine कि मैं थर्ड लास्ट चल रहा हूँ अभी, तो वो रोज़ मुझे आके बोलता रहता है ब्रो कि ये गलत कर रहा है, यू कांट डू दिस. तो ब्रो आई एम टेलिंग यू कि इट्स नॉट गोना हैपन नेक्स्ट टाइम. इफ आई एम कम्पीटिंग नेक्स्ट टाइम तो आई विल ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. ये नहीं रहा. एंड माई पेरेंट्स के लिए थैंक यू सो मच, आप लोग इतने सपोर्टेड रहे, बिकॉज आई नो कि यू बोथ आर इन गवर्नमेंट जॉब, तो आई डोंट हैव एनी मुझे खुद ही करना पड़ेगा, कुछ भी कर सकता है, बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट. थैंक यू सो मच इतना बड़ा गैम्बल लेने के लिए, एंड होपफुली इट पेज ऑफ. I think just by making it this far, Zima, you have made your parents proud. कि इतने बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट करना, इट्स नॉट ईजी, स्पेशली कंसिडरिंग इट्स योर फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट. तो आई थिंक सीखने के लिए बहुत कुछ रहता है, एंड प्रॉब्ली जैसा आपने भी बताया, आपने काफ़ी कुछ अपने खुद के नोट्स प्रेप करे हैं कि ये चीज़ों पे मेरे को काम करना है, प्ले स्टाइल्स कैसे फिगर आउट करना है, वो चीज़ आपने फिगर आउट करी. सो नेक्स्ट टूर्नामेंट इज गोना बी इवन बिगर फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस इंटरव्यू. इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. दैट वॉज अ हार्ट फेल्ट मैसेज फॉर योर फैमिली. अगली बार जब इंटरव्यू करेंगे तो होपफुली साथ में बैठ के करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में. अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू नॉट विन गेमिंग्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल टू शो योर सपोर्ट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय.